Singhal ji and Dr. Melvin Crasto ji. Shri Rajiv Singhal ji does not require any introduction. He is a General Secretary of All India Organization of Chemists and Druggists. He is a Chairman of AIOCD News Bulletin. He is also a member of Ras Bharati. He was Vice President of Indian Junior Chambers and Shanti Niketan. He has been worked as a EC member of Shanti Niketan, Indian Junior Chambers, Gwalior Chemist Association in Gwalior. He worked the same Gwalior Chemist Association in the capacity of secretary also. Our another eminent panelist also does not require any introduction. The second panelist is Dr. Melvin Crasto ji. He is the ex-principal scientist and consultant, Glenmark Life Sciences. I request Shri Rajiv Singhal ji and Dr. ji, please come on dais. Singhal ji, to enlighten us. आज गुड़ी पड़वा और हिंदुस्तानी या हिंदू नववर्ष के अवसर पर इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पधारे हुए सभी डिग्निटरीज और पार्टिसिपेंट्स का स्वागत करता हूं। जो पोस्ट फार्मास्यूटिकल era after post pharmaceutical era in the COVID, after COVID, उसके ऊपर जो एक आज सेशन रखा गया है। फार्मा इंडस्ट्री को जाने तो बहुत अहम इंडस्ट्री है जिसका आप और हम सभी से संबंध है। हम लोगों ने देखा जैसे आप लोग फार्मासिस्ट हैं, हम लोग भी सर ग्लेनमार्क में इतने सालों से काम कर रहे हैं। DAVV में सर ने जाने कितने हजारों स्टूडेंट्स को अपने हाथों से डिग्री देकर आगे बढ़ा दिया और उन्होंने नए नए जाके काम किए होंगे, पूरे देश में और विश्व में अपनी ख्याति फैलाई होगी। शैली जी हमारे सामने हैं जिन्होंने कितने बार PhD करके और कितने लोगों को PhD करा के आगे बढ़ाया है। तो आज जो इंडस्ट्री की नींव जो रखी है इन फार्मासिस्टों ने और फार्मेसी इंडस्ट्री से जो फार्मासिस्ट जो टेक्निकल लोग हैं उन्होंने रखी है। हम लोग तो फिनिश प्रोडक्ट वाले हैं। आप सब लोगों ने मेहनत की, बना के सब ने कुछ भी चीजों को दिया, मार्केट में भेज दिया और हमने लिया और उसको आगे निकाल दिया। लेकिन आज देश में व्यवसाय जो अगर देखें तो फार्मा इंडस्ट्री का व्यवसाय आप सब लोगों को बताऊं तो 1,56,000 करोड़ रुपए का व्यवसाय 10 साल तक था। 1,56,000 करोड़ के व्यवसाय में हम सभी लोग रिटेल फार्मेसी, क्योंकि आप लोग फार्मासिस्ट हैं और रिटेल फार्मेसी मेरे देश के 9,40,000 केमिस्ट जिनका आज मैं जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से आप सभी को संबोधन कर रहा हूं, उसमें 8.5 लाख रिटेल फार्मेसीज हैं। और रिटेल फार्मेसीज बिगर फार्मासिस्ट के नहीं चलती है। मैं भी एक फार्मासिस्ट हूं तो मैं जानता हूं ये बात को, फार्मासिस्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है इस व्यवसाय में, इस रिटेल में या इस और आगे इंडस्ट्री में, ये सब आप लोगों को मालूम है। तो आज जब 8.5 लाख फार्मासिस्टों की फार्मेसी चेन में सब लोगों ने मिलकर आज देश में जब हमारे इस 1,56,000 करोड़ में गए 2 साल में जो चुकी यह कन्वेंशन या जो आज हमारा सेशन है वो पोस्ट कोविड एरा के ऊपर है। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से देश में या सारे विश्व में फार्मा सेक्टर के लिए एक अलग प्रकार की चुनौतियां आई। फार्मासिस्ट लोगों को या हमारे फार्मा इंडस्ट्री से लोगों को या ट्रेड से जुड़े लोगों को बहुत सारी चुनौतियों से निपटना पड़ा। मेरे दोस्त अनिल खरिया ने अपनी बातों में बहुत कुछ बात बताई कि किस तरीके से इंडस्ट्री ने सर्वाइव किया, फार्मासिस्टों ने सर्वाइव किया। हम लोगों ने अपने चाहे वो आप लोगों ने कहीं जहां भी आप काम कर रहे हैं उस प्रोफेशन में आपने या रिटेल में अगर काम कर रहे हैं तो रिटेल सेक्टर में, होलसेल में काम कर रहे हैं तो होलसेल सेक्टर में, सभी लोगों ने अपने अपने पूरे मनोयोग से
अपना कार्य दिया इस इंडस्ट्री के लिए और इस ट्रेड के लिए, और सबसे ज्यादा तो देश के जन स्वास्थ्य रक्षक की हैसियत से आप लोगों ने कार्य किया। यह सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल जो हमने सबने प्ले किया वो है। बहुत सारी चुनौतियां थी कोविड काल में। दवा की उपलब्धता कराना, जो मैन्युफैक्चर आप लोग करवाते हैं फैक्ट्रियों में काम करके 24 घंटे 365 दिन आप लोग मेहनत करके जो आज दवा का एक प्रोसेस करके पूरी आप लोग जो दवा बनवाते हैं और उसके बाद में जो दवा मार्केट में आती है, तो उसको पूरे डोर टू डोर उपलब्ध कराना, पेशेंट टू पेशेंट उपलब्ध कराना, उस कोविड काल में बहुत बड़ी चुनौतियां थी। बहुत सारे बंद, लॉकडाउन, इन सारी चीजों को हमको आत्मसात करना पड़ा, उनसे कुछ सीखना पड़ा। इस गए 2 साल में हमने उन चुनौतियां सामना करने के लिए बहुत सारी चीजें नई सीखी। पहले हम लोग, ठीक है, गए 2 साल में ऐसा कोई बहुत बड़ा मेजर चीज इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं हुआ, सब कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक माइंडसेट में जरूर चेंज हुआ है। हम लोग डिजिटलाइजेशन की तरफ ज्यादा बढ़े हैं। आज इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ द थिंग्स, हम लोगों ने नेबरहुड फार्मेसी, नेबरहुड किराना शॉप, नेबरहुड जो भी हमारे लोग थे, हमने उन लोगों का इस्तेमाल करके, उन्होंने भी हमारे घर पहुंच सेवा देकर एक नया आयाम स्थापित किया। पेमेंट के सिस्टम बढ़े, सारा पेमेंट कैसे ऑनलाइन किया जाए, ऐसे कितने डिजिटलाइजेशन मोड आए, आईटी सेक्टर में बूम आया ताकि लोगों को घर पहुंच सेवा या इजी मोबाइल पे सब कुछ चीज हैंडी करने का जो प्रयास किया गया, वो हमारी इस गए 2 साल में बढ़ा है। पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक भी सचेत हुई है, और उसका सबसे ज्यादा लाभ आज हमको मिला है या कल भी हमको मिलेगा। इस इंडस्ट्री को, लोगों को अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, लोगों को अपने आप स्वस्थ रहने के लिए एक सोचने का एक बात आई है कि हम क्यों ना, कुछ भी हमें संकट आए तो हमें वी शुड बी एबल टू टेक अप एनी चैलेंजेस इन द केस ऑफ हेल्थ। ऐसा एक सोच लोगों में डेवलप हुआ है, तो आने वाले समय में वो भी हमारे इंडस्ट्री के लिए सहायक होगा। क्योंकि ये जो बिजनेस है आज देश में, हम सब लोग मिलके जो बिजनेस कर रहे हैं, मैं संकेत जी के इंडस्ट्री पे बिजनेस को साइज मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि मैं फार्मा ट्रेड से संबंधित रखता हूं, तो मुझे इक्विपमेंट से या वो साइज मुझे नहीं मालूम है। लेकिन आने वाले समय में इस ट्रेड का भविष्य बहुत उज्जवल है। आज अगर हम 1,56,000 करोड़ की ओर हैं, तो हमारा 2025 में अनुमान है कि यह बिजनेस का साइज 2,60,000 करोड़ होगा। चैलेंजेस तो बहुत है इसमें, जैसे आप देखते हैं, चूंकि मैं एक परंपरागत अगर मैं कहूं तो आज जो ऑफलाइन रिटेलर्स हैं या 9,40,000 मेरे मेंबर हैं, मैं उनको रिप्रेजेंट करता हूं, तो उनकी बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हर तो कोई ऑनलाइन नहीं चला सकता है। हम लोग हमारे माध्यम से हमारे लोगों को, हमारे फार्मासिस्टों को, हमारे केमिस्टों को हम लोग बेहतर एजुकेशन देके, सेमिनार करके, उनके साथ उनकी टेक्निकल नॉलेज बढ़ा के, उनको अपग्रेड करने के हिसाब से हम लोग बेहतर प्रयास कर रहे हैं, ताकि वो लोग आने वाले समय में जो चुनौतियां, जो चैलेंजेस या उनको बढ़ने के लिए जो एक मुकाबला करने के लिए एक शक्ति हो, वो हम देने का पूरे देश में प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा होगा गए समय में ऑनलाइन फार्मेसी आई। उसके पहले मैं आपको बताऊं कि चूंकि आज हम लोग इतने साल से काम कर रहे हैं, तो हम लोगों ने सरकार को, देश की केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को इस बात के बारे में आगाह किया और बताया कि ये जो ऑनलाइन फार्मेसी आएगा, तो ऑनलाइन फार्मेसी में आज फार्मासिस्ट आप लोगों को सिखाया जाता है। सर अपने सेशन में या शैली जी अपने सेशन में लोगों को सिखाते होंगे कि पेशेंट काउंसलिंग कैसे की जाए, उसकी कैसे देखरेख की जाए, उसको डोज कैसे दिए जाए। ये सब मैं इतना ज्यादा, मैंने तो डी फार्मा वो टाइम में किया हुआ है, अनुभव आधारित फार्मासिस्ट हूँ, तो मैंने वो पढ़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन इतने साल के अनुभव से ये हम सब लोगों ने बात सीखी है जो आप लोग पढ़ाते हैं। तो ये जो आज एक पर्सनल टच फार्मासिस्ट का और पेशेंट का जो होता है, वो टच के लिए है, जो कोई अनहोनी ना हो जाए ऑनलाइन से, या किसी ने भी प्रिस्क्रिप्शन अपलोड कर दिया, उस चुनौती से सामना न करना पड़े कि कोई गलत प्रिस्क्रिप्शन शेड्यूल एच, H1 और अन्य शेड्यूल एक्स ऐसी दवाओं के प्रिस्क्रिप्शन से ऑनलाइन दवाएं ना मिले, नशे की प्रवृत्ति में लोग ना जाएं,
या छोटी छोटी गर्ल्स को एमपीपी किट ना मिले, जो कि महाराष्ट्र में हुआ, वो सब लोग आगाह करते हुए हम लोगों ने केंद्र शासन को बताया कि ये देखिए, ये ऑनलाइन हमारे ट्रेड के हित में और भारत की, देश की 130 करोड़ जनता के हित में नहीं है। और इसके अगेंस्ट कई कोर्ट केसेस भी, और कोर्ट केसेस में हम लोगों को लाभ भी मिला कि आज की डेट तक जो ऑनलाइन आप विज्ञापन में देखते हैं या कहीं भी आप एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं, आज भी वो इलीगल रूप से, चाहे वो टाटा 1mg हो या रिलायंस हो या और भी कोई जो भी सेक्टर है जो देश में काम कर रहे हैं, वो आज देश के कानून के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब कोविड का संकट शुरू हुआ तो 28 मार्च 2020 को केंद्र शासन ने एक आदेश निकाला कि जो आज केमिस्ट है या जिसके पास रिटेल का लाइसेंस है, वो अपने रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट में, रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट, उसका जो रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट की पेरिफेरी है, उस पेरिफेरी में जाके वो ऑनलाइन अपने डोर डिलीवरी, नॉट ऑनलाइन, डोर डिलीवरी मेडिसिन कर सकता है, क्योंकि वो संकट का काल था। उस संकट काल का लाभ लेके आज जो भी एजेंसी आई हैं, ये एजेंसियां अपना व्यापार कर रही हैं, जो हम सब लोगों के लिए, आज अभी जो फार्मासिस्ट है उनके लिए, या जो सर आपके निर्देशन में और हजारों लाखों फार्मासिस्ट निकलेंगे, उन लोगों के लिए चुनौती है, क्योंकि हमको भी अपना सबका व्यवसाय सुरक्षित रखना है। ऐसा नहीं है क्योंकि हम अमेरिका नहीं हो सकते कि जहाँ केवल 4 लोगों ने पूरे अमेरिका का व्यवसाय को केंद्रीकरण कर रखा है, मोनोपोलाइज कर रखा है। उनकी इच्छा शक्ति से ही दवाइयां लिखी जाती हैं, उनकी इच्छा शक्ति से ही दवाइयां बेची जा सकती हैं। ऐसा हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता कतई स्वीकार नहीं करेगी। इस बात के लिए लेके हमने एआईसीटी ने पूरा संकल्प कर रखा है कि हम देश में इस प्रकार से ऑनलाइन लागू नहीं होने देंगे, क्योंकि वो आप सब लोगों की चुनौतियां हैं। आज अगर देश में, मैं सर इंडस्ट्री के बारे में भी आपको कहना चाहूंगा कि आज अगर इंडस्ट्री में ये लोग बहुत बड़े लोग हैं, चाहे वो, मैं नाम भी नहीं लूंगा, कोई भी बहुत बड़े लोग हैं, वो किसी को भी खरीद लेते हैं। आने वाले समय में इंडस्ट्री के लिए भी क्या होगा, जिसका प्रोडक्ट चलता है, नाम किसी कंपनी का नहीं लेता हूं, जिसका प्रोडक्ट चलता है, ये बड़े बड़े लोग ऐसे ही प्रोडक्ट अपने आप से बनाएंगे और आगे आके अपनी खुद की मोनोपोली करेंगे और वो खुद से प्रोडक्ट लिखवाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा, आपने अपने स्टडीज में भी देखा होगा, अमेरिका में इंश्योरेंस प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है इंश्योरेंस का इस हेल्थ सेक्टर के लिए। तो जब मोनोपोली होगी तो वो कंपनियां केंद्रीकरण करेंगी, मोनोपोली करेंगी, और आने वाले समय में हम सब लोगों के लिए, इंडस्ट्री के लोगों के लिए, फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े सारे लोगों के लिए चैलेंज स्थापित करेंगी। तो वो हम सब लोगों के लिए पोस्ट कोविड में चैलेंज होगा। आज अगर हम लोगों को बात है, इस बात को हमें देखना होगा, तो हमें हमारी सर्विसेज को, जो भी आप लोग पढ़ते हैं, सीखते हैं अपने अपने गुरु लोगों के मार्गदर्शन में, उसको आगे जाके हमें पब्लिक को बताना होगा। या जिस सेक्टर में, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो आज कितने प्रतिभा के धनी लोगों को आज यहाँ अवार्ड और अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो हम लोगों को ये सब बताना होगा कि हम लोग रियल जन स्वास्थ्य रक्षक है। मैंने जो फार्मासिस्ट को अगर मैं बोलता हूं, तो आप ही देश के सच्चे स्वास्थ्य के रक्षक है। इस बात को हमको आने वाले समय में चरितार्थ करना होगा। चैलेंजेस तो बहुत आएंगे, आपके जीवन में पूरा चैलेंजेस से भरा हुआ है, और जिसने सारे चैलेंजेस को निपट लिया, तो निश्चित रूप से हम आने वाले समय में हम अपने देश के स्वास्थ्य को, देश की जनता के 130 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य को अच्छा रखने में कामयाब होंगे। भविष्य आपका है, समय आपका है, हमें इस बात को डिसाइड करना है, उस समय को हम किस तरीके से निकालें। या तो लोगों के सामने घुटने टेक के निकालें, या हम अपने आप को खड़े करके अपने इस जो भी आपका एक फार्मासिस्ट का एक रुतबा है, उसको क्रिएट करके, उसको जज्बा उसमें लाके हम उस तरीके से निकालें। यह निर्णय आपका है। तो मेरा आपको यही कहना है कि आने वाले समय में सारी चुनौतियों का सामना करते हुए जो आपने सीखा है, उसको आप डिलीवर करें। सीखने की कोई उम्र नहीं होती और डिलीवर करने की कोई उम्र नहीं होती। हम जीवन भर, 8 साल, इतने साल की उम्र है, आज भी आप कुछ ना कुछ रोज सीखते होंगे, लोगों को सिखाते होंगे। और हम लोगों को जब आज सर इतनी उम्र में ये कर रहे हैं, या हम लोग कर रहे हैं, तो आप लोग भी आज युवा हैं, आप लोगों ने जो सीखा है उसको आगे डिलीवर करने की क्षमता को और विस्तारित करें, लोगों को डिलीवर करें, देश की सेवा करें, देश की रक्षा करें, क्योंकि आप ही देश के रियल जन स्वास्थ्य रक्षक है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। आपने बहुत ही सरल तरीके से रिटेल फार्मेसी, होलसेल फार्मेसी के चुनौतियों के बारे में, संभावनाओं के बारे में
सदन को अवगत कराएं। मैं आज इस मंच के माध्यम से आदरणीय श्री राजीव सिंघल जी के माध्यम से सर के 9,40,000 सदस्यों को मार्च 2022 से सतत रूप से लगभग 135 करोड़ लोगों की सेवा करने के लिए बहुत बधाई देता हूं। आपको कभी अवसर मिला घर से बाहर जाने का, तो अगर आपने कोई शॉप खुली देखी होगी तो वो सिर्फ मेडिकल शॉप होगा, मेडिकल स्टोर। मेडिकल स्टोर, यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है। रिटेल फार्मासिस्ट एक लिंक है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और आम लोगों के बीच में। वही एक ऐसा साधन है, माध्यम है, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को जनमानस तक जोड़ता है। उसका व्यवहार, उसके व्यवसाय के गुण कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के समाज में जो एक स्थान स्थापित होना है उसमें पूरी तरीके से मदद करता है। पिछले 2 सालों में और विशेषकर सेकंड लॉकडाउन के समय जब स्थितियां बड़ी विकट हुई, तब रिटेल फार्मासिस्ट ने बहुत ही लगन से अपनी स्वयं की मृत्यु की चिंता किए बिना समाज की सेवा करी। सर, मैं आपको एक बार पुनः आपके माध्यम से उन सभी 9,40,000 आपके सदस्यों को बधाई देता हूं। साथ ही अगर हम अवसर की बात करें, सर ने भी बताया है, आपने भी महसूस किया होगा, फर्स्ट लॉकडाउन के बाद रिटेल मेडिकल स्टोर की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई। यह आपका व्यक्तिगत अनुभव भी हो सकता है। आपके आसपास के इलाके में, शहर में लगभग सामान्य ग्रोथ 10 से 12% की है रिटेल मेडिकल सेक्टर में, लेकिन लॉकडाउन के बाद ये ग्रोथ काफी तेजी से बढ़ी। अब यह चुनौती भी बन चुकी है कि क्या इस तेजी से जो ग्रोथ हुई है रिटेल मेडिकल स्टोर्स की, क्या भविष्य में कहीं ना कहीं ये चुनौती तो बनेगी। दूसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज निकल के आई है कोविड के दौरान, और कोविड के दौरान भी, उसके बाद भी, एक इसने कितना सुअवसर प्रदान किया है भारत की जो प्राचीन पद्धति है आयुर्वेद, उसको पुनर्स्थापित कर। पुनर्स्थापित शब्द इसलिए यूज करेंगे क्योंकि आयुर्वेद उसके पहले पूर्ण रूप से स्थापित था। आयुर्वेद और एक कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम के साथ लोगों ने कोविड के साथ लड़ाई लड़ी। सिर्फ ये भी मजबूरी रही कि कई बार जो रेमडेसिविर है, एल्बुटरिसिन भी है या कुछ और मेडिसिन थे, उसको इतनी आसानी से सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं होता। तो जैसा जिनके पास था, बेसिकली सभी लोगों ने ये कोशिश करी कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी बनी रहे, और उस इम्यूनिटी को अच्छा बनाए रखने के लिए आयुर्वेद में कई सारे साधन हैं, कई सारे उपाय। और इस कोविड ने न सिर्फ भारत के बाहर भी, इवन पश्चिमी देशों में भी हर्बल मेडिसिन कह लें या आयुर्वेदिक सिस्टम कह लें, उसकी स्वीकार्यता को और ज्यादा बढ़ाया। एलोपैथिक सिस्टम में लगभग हम सबसे बड़े जेनेरिक प्रोड्यूसर हैं, सर वो करेक्ट करेंगे। वैक्सीन के क्षेत्र में सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं, निर्यातक हैं। साथ ही हर्बल मेडिसिन में जबरदस्त ग्रोथ हुई है पोस्ट कोविड पीरियड में, और आने वाले भविष्य में इसके ग्रोथ की पूरी संभावना है। साथ ही जो दूसरे सिस्टम है उनके भी ग्रोथ की संभावना है। हम इन सारी चीजों को अगर समग्र रूप से देखें तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, एलोपैथिक, हर्बल, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, इन सब की ग्रोथ और डेवलपमेंट की पोस्ट कोविड पीरियड में ग्रोथ की बहुत सारी संभावना है। विश्व में भारत की जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उनको स्वीकार्यता और बढ़ेगी। उसका कारण एक और है, क्योंकि साथ में कोविड की शुरुआत ऐसा माना जाता है चीन से हुई। क्या सच्चाई है इसके बारे में पूर्ण प्रामाणिक रूप से कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कोविड की शुरुआत चीन से हुई। तो चीन के प्रति रॉ मटेरियल मेरे ख्याल से चाइनीज रॉ मटेरियल इंडियन रॉ मटेरियल की तुलना में थोड़ा सा सस्ता है, और चूंकि बिजनेस में
कास्ट को भी एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण घटक होता है। तो हो सकता है कि चाइनीज रॉ मटेरियल हम ज्यादा खरीद कर रहे हो, तो धीरे धीरे इसने एक और अवसर प्रदान किया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को एपीआई में आत्मनिर्भर करने। ये सर ने जो कहा वो उसमें मैंने अपने व्यक्तिगत विचार व्यक्त किए। So good afternoon, all of you. My talk will be plans for the future, post-COVID era, what we are doing. Let me start with, Vikram. What Vikram has done, Vikram has started Operant Group. I'm like a mentor to him. He consults me for every small thing. He enjoys it. And Vikram has organized a conference in Bangkok. I don't know how many of you are aware. It was in Bangkok, that was offline when COVID was not there. Then we planned a conference abroad, but then we thought, let us have a conference in Mumbai. It was a grand success. We had a big, international clients, international people giving talks, huge audience. Corona was not there that time. In fact, the crowd was so big that we had to turn off some students. It was a packed hall of 500. Vikram, आपका जो hall packed था उस वक्त VS college में. Then we thought, let us go on a big scale. We had targeted Oman, say countries like Nepal, Kathmandu, or Dhaka, or Sri Lanka, even Dubai. But then the corona came, and our plans it did not proceed. Now you must be wondering why I am talking, praising him. Actually, what he is doing is, Vikram is doing is, he is bringing all the students on one platform. Students, you should not just sit and just listen, maja aaya offline. No. You do networking. Take the numbers. Take the numbers of Sanket. He has a big industry in pharma. He doesn't have time. How he has come, and it is a miracle. He has brought his family also, his wife, and he is so busy. I went to his factory and I saw how much equipment he is making. Sanket, hats off to you. You came only because you wanted students to interact with you. Students, take an opportunity. Visit his factory. Take his numbers. This is the idea of this conference. Operant sponsored international conference is not just for fun. It is future. What we are planning. See, then the second person who supported us was Dinesh Mishra. He supported like anything. Actually, I call him up every time and ask for ideas, what is happening. But problem is, in Indore there are so many conferences going on. And somehow, it is great he attended. He brought an industry guy, Pritam, who is general manager, General Manager, Glenmark, in Indore. आप लोग उनसे मिलिए, उनका नंबर लीजिए, उनको सताइए, जैसे विक्रम मुझे सताता है, सताओ and see. Student, this is not a place, just certificate लिया, CV में लिखा. No, it is a place for interaction. People like Pritam are there, people like Sanket. I come to next round. Important people are there. Interact. I have given my mobile to some of the students to do it. Please complete it. And let us have, Vikram, let us have conference. किधर है Vikram? Next target, Pune. उसके बाद नहीं international की बात करो. International Kathmandu. Let us have it. So that is the plan. We already had, we had planned, but only the corona came. Our plan is, that is Vikram. I'm just supporting it. Operant Group is to enlighten you about the future. What is pharma? Pharma is big. QA, QC, regulatory, IPM, pharmacology, pharmaceutics, pharmaceutical chemistry, writing, patents, what not, everything, including artificial intelligence. Everything is included. Pharmaceutics में tablets, capsules, injections, everything. Such a big future is there. Next person, who supported me is Madam Shaili Chaudhary. How much effort she has taken? She has brought a full team. मजाक के लिए नहीं है टीम ऐसा.
ये लर्न करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए, फ्यूचर का, देयर आर ग्रेट पीपल सिटिंग हियर, इंटरेक्ट विद देम, टेक द नंबर्स, हमारे दोनों साहब हैं यार, interact, learn from them. See, in my time, you know, for a job, I used to stand below a building and wait for a person's car to give the CV. एक महीना वेट किया, तब जाके कहीं CV दिया. 1 month I waited. आज आपको people are there for you to interact. I am highlighting the importance of the conference. How much efforts have gone in. Actually, the space would have doubled only because, you know, the corona, the dates clashing and all sorts of things have happened. I assure you, the next conference, Vikram, will be jam-packed. It will be packed. So with support, there are few people, you know, I am not very familiar. I would have taken the names, like Juhi Madam, Rajiv Singhal ji, abhi just familiarize ho gaye. We'll all put our efforts together. But only thing is, what all you take from this conference is the contacts, the networking, the interaction with people. Let us not see, lot of things have been talked here. I think Vikram is planning an international placement for one student abroad. Am I right, Vikram? Yes. You are planning an international placement for one student abroad. We have announced. You are well known. We'll put our efforts. We'll do it in the next conference. We'll show that. We'll present the student. This student we have placed him abroad. That is what we do. We look for postdocs abroad. Postdocs for students or teachers. We'll do it. That is the idea. See, I may not take names of all the people because I have to be also familiar with most of the names. But maybe the next conference I'll be familiar with a lot of new people here. That is my idea also. So what I tell you is, it is this conference, Operant International Conference, is a very valuable asset. Take it while going home. You know, something great has happened here with you. Something great. It is not just, you know, simple stage pay award, some lectures, some talks. No, it is something great happening. I assure you, next time, maybe I will also travel if needed, any part of the world. It will be a great thing. Now coming to pharma. Pharma, मैं भूल गया, equipment भूल गया list में, QA, QC, regulatory, उसमें equipments, medical devices, services like GMP, plant setup, all are included. Students here, you can choose a career in anything. You can set up a plant, you can design a plant, you can do GMP, you can do, you know, anything. You can do international business development, API, formulation, selling or buying, API selling or buying, all these things you can do. So I'm not going to give you a big lecture on, you know, ye kya hua, wo. Anyway, all the other people have talked, with due respect to all of them. But my aim to you is take something great from this conference. It has already happened. That is what I would tell. If I miss something, just tell me anything. Maybe the last, pharma is number one, India is number one. Nobody can beat India now. We are at the top of the world. And the students, the teachers, we feel proud that you are a part of a great community. It is great. Thank you. Jai Hind. The aims and objective of the conference. Basically, what I perceive, sir, is likely to inculcate the approach to manage things, whether it is a management or whether it is a scientific management. Personally, or every business or any activity starts with the planning. And planning is a futuristic approach. So what to do in future? So sir tried to give you a direction
how to develop a good plan. Thank you sir. अगर आप में से किसी के भी कोई प्रश्न है, आप हमारे आज के इमिनेंट पैनलिस्ट के साथ डिस्कस करना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, तो आपके क्वेश्चंस, आपकी क्वेरी, आपके आइडियाज का स्वागत। बेसिकली देखिए, सर ने जिस चीज पे एम्फेसाइज करने की कोशिश की है, इंटरैक्शन। हो सकता है आपके पास बहुत अच्छे विचार हो, लेकिन अगर आप अपने विचारों को किसी और के साथ चर्चा नहीं करेंगे तो उस विचार को आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, आजकल नेटवर्किंग नया शब्द यूज होने लगा है, लंच हो, रिफ्रेशमेंट हो उसके साथ। तो बेसिकली हम जब भी किसी के साथ इंटरेक्ट होते हैं या अपने विचार, बेसिकली इट इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। ये हो सकता है कि पिछले 2 घंटे से हम लोग यहाँ पर हैं, ये संभव है कि छोटा सा विचार भी अगर आपके मन में आया होगा तो वो विचार भविष्य में आपकी प्लानिंग, आपके कमिटमेंट, आपके डेडिकेशन, आपके एफर्ट्स से हो सकता है कि बड़ा इंडस्ट्री का रूप ले सके। तो मैं एक बार पुनः आप लोगों से चाहूंगा कि अगर आपके कोई इस विषय पर कोई प्रश्न है या और कोई आप जानकारी चाहते हैं आज हमारे विद्वान लोगों से, तो आप पूछ सकते हैं। To ask how to build a pharma drug business and what is the basic structure of API export and its production and all. Production, we are in trade. Sir will tell everything about it. देखो, API for export, yes, has to be manufactured in a GMP environment. There has to be certification. Certification क्या कहते हैं? Local GMP, WHO GMP. If you want to export to US, US FDA, Europe FDA, Britain में MHRA, Japan में PMDA. You should have certification. The plant should be equipped in such a way the API or intermediates manufactured should comply to those norms and standards. Impurity levels आपको पता है, ICH guidelines से 0.1% is fine, but 0.15% has to be characterized. So stringent है, India is capable of doing it. So your question is how to do it. Yes, sir. Yeah, first thing आपको एक प्लान खड़ा करना है, उसमें पहले R&D चाहिए, QA, QC, stores, management, lot of things are involved, supply chain, goods coming in, goods going out, packing. The whole industry, it is a whole package, whole thing. Equipments are needed, machineries are needed, and most important is the people are needed. People sitting here, they will be at the top one day. People are, ये लोग हैं, and India is number one. मैं बार-बार बोल रहा हूँ. तो आपको बेचने के लिए आपको कोई तो क्लाइंट चाहिए, नेचुरली क्लाइंट्स को मिलते हैं। अभी तो सिचुएशन ऐसी है कि वी आर नॉट एबल टू सप्लाई, यू नो, द डिमांड इज वेरी हाई। तो इफ यू वांट टू पुट अप अ प्लांट, यू कैन गो इट, वो डिमांड है, आप ले लीजिए, बना दीजिए प्लांट, बेचिए। एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपका? Sir, mainly the topic of my question is like pharma trade. The trade of that package material or API is a part of that trade. Yes, packaging material is a part. It has to comply. There are standards, norms. Everything has to comply. It has to go through QA, QC, or the regulatory. They have to approve all that. Material has to comply. Everything stringent norms. And for that, again, I'm stressing people are needed. Yes, sir. You, students here, and who will help them? The teachers. दिनेश मिश्रा जी, शैली चौधरी जी, कौन बनाएंगे? संकेत इक्विपमेंट बना के देगा, एंड सबको साथ में कौन लाएगा? विक्रम चौधरी. He will bring every one of us together and do it. So what I feel is, any student who has any doubt, you need not come here also. उधर ही mic दे देंगे, you can tell from there, because some of them they fear coming. आप वहीं से बोल सकते हो आपका क्वेश्चन. But do not hesitate.
This is an opportunity for you to interact with people, trouble them, get your ideas clear. आपका कुछ स्पेसिफिक होगा तो मुझे बाहर बोल दीजिए, नहीं समझ रहे नहीं तो व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल रहेगा फ्री, व्हाट्सएप पे तो आंसर मिल जाएगा, नहीं तो कॉल करो. थैंक्स. आर यू सैटिस्फाइड विद आंसर? Anyone? In the field of manufacturing, but in the research field, how we can grow? Companies have to put money. So now it is happening. Alright. So a lot of you may find jobs in research and development, drug discovery. India mein drug discovery is taking off slowly. For that you need professionals in patents, patent filing, chemists, formulators, formulation research. Everything is included. Your question is, that India is a little behind in, but it is taking up. It is government is supporting us, and you will find in the next 5 years, some of you may be in the research department, possibility, because government is giving a lot of incentives to put up research and incentives to develop research. So tax rebates and all those things are there. So you will find suddenly new research centers coming up. And the most important is a lot of research centers will be shifting from China to India. A lot of multinationals will shift from China to India. So that may help you students. Is my answer okay? मिल रहा है इंडिया में, तो आई गेस ठीक है, स्टोर कुछ ओपन हुआ है, लेकिन अभी ज़्यादा टेलीमेडिसिन को प्रोत्साहन इंडिया गवर्नमेंट भी दे रहा है. सर उसका फ्यूचर में फार्मासिस्ट का क्या अभी जो है टेलीमेडिसिन होगा तो उसको फार्मासिस्ट को मिनिमम यूज होगा अभी स्टोर के साथ, तो उसके लिए सर ऑल इंडिया केमिस्ट एसोसिएशन का ऐसा कुछ किया, मतलब कुछ इनिशिएटिव लिया कि ऐसा हो सकता है अच्छा फार्मा स्टूडेंट के लिए? AIOCD ने आज से जब गेट आया 2005-06 में, तो जब हमको मालूम था AIOCD को, मैं तो 91 से AIOCD में काम करता हूँ, तो हमको मालूम था कि आने वाले 2020 में क्या होने वाला है. सारे देशों से चुनौतियां, कोविड तो अभी आया, लेकिन उसके पहले जब गेट आया तो हमको मालूम था 183 देश आके देश में व्यवसाय करेंगे और हमारा ये इंडस्ट्री ओपन होगी. टेलीमेडिसिन की संभावनाओं के ऊपर निश्चित रूप से ये देश के लिए अच्छा है, लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन हम जो बात को एम्फेसिस करते हैं कि रिटेल स्टोर पे टेलीमेडिसिन डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन लिख दिया, लेकिन उसका मिसयूज ना हो. सबसे बड़ी बात टेलीमेडिसिन में है, प्रेस्क्रिप्शन शुड नॉट बी मिसयूटिलाइज्ड बाय एनीबॉडी. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, नेशनल NHM RM को, नेशनल हेल्थ मिशन को हम लोगों ने जो एक लिख के दिया है या मेमोरेंडम दिया है, तो उसमें एक साफ बात लिखी है कि द प्रेस्क्रिप्शन शुड नॉट बी मिसयूटिलाइज्ड बाय एनीबॉडी. आप देखिए साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, उनकी अगर दवाएं लिखी जाती है, नार्कोटिक सब्सटेंस, हम मना तो नहीं कर सकते. ट्रेमाडोल लोगों को लिखी जाती है, पेशेंट को रेगुलर दे आर टेकिंग द मेडिसिंस, क्योंकि वो उसके बगैर ठीक नहीं हो सकते, उनको आवश्यकता है. If they don't want to go to the chemist shop, they should utilize the telemedicine. But whatever we have suggested to the government of India that there should be a register of a doctors. All 11.25 lakh doctors should be registered in a portal, so that they should utilize their digital signature in the prescription. That prescription should go to the market, to the local pin code area. The government has started this thing in Pondicherry and Chandigarh, Union Territories. तो हम लोगों ने उस बात को emphasize किया, okay, telemedicine is okay, we are going to come in the telemedicine also, but शासन को, केंद्र शासन को एक सिस्टम लगाना चाहिए, ताकि हम एक पर्चा लेके जाते हैं, एक जगह गए, किसी ने दूसरी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया, 3 वेबसाइट पे अपलोड कर दिया, 4 वेबसाइट पे अपलोड कर दिया, and you cannot go to the chemist and chemist to get the wrong medicine. No, आपको कहीं ना कहीं हेजिटेशन आएगा. टेलीमेडिसिन या ये जो नया कंसेप्ट यूज करने में किसी को कोई हेजिटेशन नहीं है. अगर कोई नार्कोटिक की ड्रग को स्टॉप करना चाहता है, उसका आरोप प्रत्यारोप सीधा केमिस्ट के ऊपर लगता है. That should not be there. तो जो गवर्नमेंट को हमारा सजेशन है कि हमारे देश के 9 लाख, मैंने आपको 9,40,000 लोगों को बताया, आप 9,40,000 लोगों को समझें कि हमारा कितना बड़ा दायरा है.
कि 9,40,000 लोग एक एक के 5-5 घर के परिजन, किसी के यहाँ 5 एम्प्लॉय काम करते हैं, किसी का 10 एम्प्लॉय काम करते हैं, उनका परिवार 4 करोड़ लोग, 4 करोड़ लोग केवल ट्रेड से जुड़े। बाकी मैन्युफैक्चरर, उसमें काम करने वाले हजारों लोग, उसमें काम करने वाले करोड़ों उनके परिजन। तो ये कम से कम 9-10 करोड़ लोगों की, सर ने बोला बहुत वाइड इंडस्ट्री है, मैंने भी बोला अपनी बात में ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो आज हम 130 करोड़ देश में 9-10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस नोबल ट्रेड और प्रोफेशन से जुड़े। तो सरकार को उस काम को रखने के लिए, उसमें अच्छी व्यवस्थाएं देने के लिए हमने टेलीमेडिसिन को ओके किया है। लेकिन बट देयर शुड बी द रजिस्टर ऑफ डॉक्टर, उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और प्रेस्क्रिप्शन ई प्रेस्क्रिप्शन होना चाहिए एंड इट शुड गो टू द पिन कोड एरिया, उस जहां मरीज रहता है, क्योंकि वो आधार बेस्ड रहेगा ई प्रेस्क्रिप्शन, तो उस मरीज के पिन कोड एरिया में जाएगा, वहां जो भी केमिस्ट होंगे दे कैन सर्व द पेशेंट इन द टाइम टू कम। ये हमारा प्रयास है इसके लिए। थैंक यू। मल्टीनेशनल्स भी आए, लेकिन आज भी कॉलोनी की किराने वाले की शॉप में बहुत ज्यादा उससे अंतर नहीं है। तो एक रिटेल मेडिकल स्टोर, दूसरा हमारा जो कंज्यूमर बिहेवियर, मेडिसिन परचेस करने का जो बिहेवियर, वो भी थोड़ा सा पश्चिम कंट्री की कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारी आदत होती है कि जब तक मेडिकल स्टोर पे जाए नहीं, देखे नहीं, उससे बात नहीं करें, तब तक थोड़ा सा पर्सनल टच की जो कंज्यूमर बिहेवियर में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में रिटेल मेडिकल स्टोर का, ऑफलाइन मेडिकल स्टोर का काफी अच्छा भविष्य है। सर थैंक यू वेरी मच। मैं आपकी बात में कुछ और ऐड करना चाहूंगा। आपने बोला आज देश में अगर हम लोग, मैं पूरे प्रदेश में अगर 1,56,000 करोड़ रुपए का अगर बिजनेस है और आने वाले समय में अगर वो 2.5 लाख करोड़ का होगा अगले 2 साल बाद, तो आज हम 1,56,000 में फार्मेसी का, मैं टेली मेडिसिन की बात नहीं कर रहा हूँ। टेली मेडिसिन इज डिफरेंट फ्रॉम ई फार्मेसी। वी आर नॉट अपोजिंग टेली मेडिसिन, वी आर अपोजिंग ई फार्मेसी इन द ट्रेड, क्योंकि वो ईविल है, वो आगे जाके देश को नुकसान पहुंचा सकता है। ये कोई मोबाइल नहीं है जो अमेज़न से खरीद लिया, उसकी बजाय कुछ भी आ गया और खा लिया। ये दवा है, दवा को दवा के तरीके से खाना है। आपने बहुत अच्छी बात की कि आप नियर बाय केमिस्ट के पास जाएंगे, उससे मेडिसिन लेंगे और तभी आपको संतोष होगा। वो आपके कंधे पे हाथ रखेगा और बोलेगा कि नहीं दादा, सुबह दोपहर शाम रात ऐसा लेना है, सोते समय लेना है, दूध के साथ लेना है, पानी के साथ लेना है, वो सारी चीज बताएगा जो आपको ये एमिनेंट प्रोफेसर्स लोग जो बताते हैं, पढ़ाते हैं। तो वो आपने बहुत अच्छी बात करी। आज अगर देश में बात करें ई फार्मेसी की, तो 4-5% का उनका एक शेयर है। और बहुत अच्छी बात जो आपने बोली, देश में आने वाले समय में भी हम जो मैक्सिमम समझते हैं, मैं एक पदाधिकारी की हैसियत से, ऑल इंडिया केमिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी हैसियत से जो मैं समझता हूँ, ये 10-12% से ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन हमको आप सब लोगों की मदद से, हमको हमारे व्यवसाय के तौर तरीके सारे बदलने पड़ेंगे, नए परिवेश में डालना पड़ेगा, लोगों को नए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सेवाएं देनी पड़ेगी। वो बहुत जरूरी है और उसके लिए मैं और हमारी एआईसीटी हम लोग काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। और मैं प्रश्न है आपको Sir, I am very much confused between M Pharma and MBA. So can you please explain the scopes of M Pharma and MBA? I let and what is MBA? देखो M.Pharm जो होता है वो टेक्निकल होता है। It will teach you suitics और analysis और chemistry. It is specialization in certain areas, quality assurance और भी different branches है, regulatory, intellectual property management. That's M.Pharm. It is technical. तो जो स्टूडेंट टेक्निकल चाहता है, जिसको इंटरेस्ट है टेक्निकली स्ट्रॉन्ग, he will go for, he or she will go for M.Pharm. He will learn the techniques so that he can go to industry and do discovery, regulatory, GMP or anything, IPR, pharmaceutics, pharmacology, everything. जो स्टूडेंट MBA जाना है, उसके दिमाग में बिजनेस होता है, हाउ टू यूज बिजनेस। कोई स्टूडेंट उनको इच्छा रहती है कि MBA करेंगे, अब्रॉड जाएंगे, फ्लाइट पे बैठेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, वो अपना स्किल्स यूज करना चाहता है, इंटरैक्टिव स्किल्स, यूजिंग द नॉलेज he or she has in B.Pharm or combine MBA with M.Pharm, combining technical part with business.
देश को उनकी भी जरूरत है, टेक्निकल लोगों की जरूरत है, एमबीए वालों की जरूरत है, बिकॉज मटेरियल जो पड़ा है वो तो बेचना भी, उसके लिए रॉ मटेरियल खरीदना है। सो दीज स्टूडेंट्स जो एमबीए करना चाहते हैं, जिनके अंदर जज्बा है, जिसके अंदर फील है, इंटरेक्शन, दे विल गो फॉर एमबीए. So this is the difference between MBA and MBA teaches you certain interactive skills, interactions, markets, market analysis, trends, how to analyze trends and all, and including some financial activity, calculating finances and all. So industry pharma needs M.Pharm also, PhDs also. It needs MBA, M.Pharm combined or MBA specialized. They are needed. But एक स्टूडेंट के अंदर चाह होती है, they feel they want to go abroad, interact with foreign clients, they go for international business management in MBA. ये मैंने ट्रेंड देखा. आपको क्या करना है? Foreign. That is MBA. But MBA is domestic also. You can interact with a lot of people, get business for the company. That's it. It is also part of our. Thank you, sir. Dignitaries on the dais and off the dais. So there is a point, the word generic drugs coming in the market for reaching to maximum people who can afford it. So I would like to understand what is the efficacy of that drug, because people still have doubts. If I tell the little people, when a doctor writes a prescription, they have a doubt whether should I get the same medicine or should I try for the generic drug. And how effective are these drugs? आंसर दे दो और सिल्डनाफिल. नाउ पेटेंट राइट उनके पास थे तो 20 साल तक दे विल सेल, फाइजर विल सेल सिल्डनाफिल. अभी क्या होता है 20 साल के बाद जब उनका पेटेंट एक्सपायर होता है, जेनेरिक प्लेयर्स कम इनटू द मार्केट. नेचुरली दे हैव टू कम ना. द कॉस्ट इज वेरी हाई ऑफ द ओरिजिनल ड्रग. से वायग्रा, सिल्डनाफिल ऑफ famous drug of Pfizer. 20 years down the line, people generic have to come. So they come via 180 days patent exclusivity. That is called para 4 filing. They get exclusive marketing rights. They sell the drug. लेकिन उसका requirement क्या होता है कि you have to do some studies, bioavailability studies, and regulatory bodies in US होगा तो US FDA, India होगा तो CDSU. You have to file a dossier and prove that it is as efficient as the original drug. तो जेनरिक मैडम अगर जेनरिक मार्केट में नहीं आएगा, अपना कॉस्ट कम नहीं होगा. So generic medicine is as good as the innovator because the regulatory bodies are monitoring it. Bioavailability studies, efficacy, toxicity करने की जरूरत नहीं. Efficacy is the main. Efficacy. People are still not gaining confidence in generic. Yeah, people are not generating confidence because they feel the word generic उनको थोड़ा खटकता है. Actually, for us scientists like me, generic नहीं होगा. If generic is not there, how poor people will get the medicine? So according to me, generic is as good as the innovative drug. It is as good as innovative drug. Example ले लो डोलो. आपने क्रोसिन is the actual brand name innovator का. डोलो काम कर रहा है ना अपना. Entire कोरोना में डोलो कितना बिका? तो डोलो is generic कौन से? Example दे. So you rightly said Dolo अभी जितने भी vaccination के बाद Dolo was the product which was very common. Yeah. Instead of Crocin, people are going for Dolo. But can doctors and the pharmacists can play a role in building confidence in the common people for the generic drug? Now government is playing a role. Government is supporting generic medicines and they are a little cheaper. At least 40% better, cheaper, कम रहते हैं. 10 रुपए में से 6 रुपए में मिल जाता है. Example दें, 100 में 60 rupees में मिल जाता है. So generic is as good as. But what about the critical illness? No, it is a common drug. See, any drug, it goes through testing. Testing होता है. So any impurity, anything is tested drug. अगर वो comply नहीं करेगा वो fail हो जाएगा. And government laboratories are also monitoring. So according to me, generic is as good as innovator and at a cheaper cost.
and it should be encouraged so that more players come in, more competition. More competition means more efficiency. More efficiency. And more the generic players, more our pharma students will get jobs. Regulatory, testing, QA, QC, DAVV studies, pharmacological activity, formulation, new formulation. Madam, but end of the day, आपका जरूरत पड़ने वाली है, equipment. आपकी जरूरत पड़ने वाली है. We have to reach being in a country like India. So end of the day, whatever happens, you are there. So आपके equipment में generic medicine भी बनने वाला है. Should we reach to the maximum people? Yeah. If we are sitting in a country like To reach India, maximum people, more generic medicine come in. It is acceptable. It is good, and government is also encouraging. And anybody sitting here, say anybody, they will say it is as good as the innovator drug. So you should not hesitate. You should not have a mind block that generic है. ऐसा नहीं. एक ज़माने में वैसा था ना मैडम. इंडिया मतलब इंडियन ड्रग मतलब अभी देखो चाइनीज गुड्स हाउ वी थिंक यू नो चाइना का क्या है खराबी होता है. एक ज़माने में इंडिया को ओपिनियन ऐसा था. अभी नहीं है. नाउ इंडियन ड्रग में स्टैंडर्ड होता है. People are happy to take. Even in Europe, USA, they are happy. Australia, Singapore, they will be happy. Made in India means अपना drug best. So what we sell is generics, no madam? We are selling generics all people over. still don't have confidence in the retail market where they go. Yeah, local people naturally are resisting, some of them. But in the international markets, अपना generic product धूम मचा है. Entire world. This I can tell you. Entire world, entire Africa, entire CIS countries, Russia, entire Philippines, Cambodia, entire Dubai, पूरा world में अपना medicines made in India. Indians don't have confidence. We have to generate confidence. Yes, we have to. आज अगर जेनरिक की बात करें तो जेनरिक का आज का बिजनेस 12% है. सरकार ने 872 दवाओं पर प्राइस का मार्कअप लगाया. तो प्राइसेस ऑफ द कंट्रोल कैटेगरी 872 टाइप ड्रग्स हैव बीन फिक्स्ड बाय द एनपीपीए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. उसके अलावा जितनी भी दवाएं हैं वो जेनरिक में हैं या सब कुछ है वो डी कंट्रोल कैटेगरी में है. ट्रेड के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताऊं तो ट्रेड को तो मार्जिन अपना उतना ही चाहिए 10% और 20% का. जो गवर्नमेंट ने कंट्रोल कैटेगरी पे मार्जिन है वो 8% टू द होलसेलर होता है, 16% टू द रिटेलर होता है. और जेनरिक पे भी मार्जिन, चूंकि जेनरिक डी कंट्रोल कैटेगरी की दवाएं हैं, जेनरिक 872 को छोड़कर जो दवाएं हैं उसमें सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता है. तो आज प्रधानमंत्री जन औषधि भी चल रहा है. मैं अगर ऑल इंडिया की दृष्टि से बात करूं तो हम लोगों ने अपनी एक मीटिंग में केंद्र शासन के स्वास्थ्य मंत्री जी से मुलाकात करके उनको एक मेमोरेंडम दिया था. उनको बोला था कि आप जन औषधि स्टोर 2000, 3000, 4000 खोले हुए हैं. हम आपको देश में 9,40,000 जन औषधि स्टोर खोल के देते हैं. हमारी हर केमिस्ट शॉप पे एक रैक जन औषधि का मिलेगा. सारी दवाएं उपलब्ध रहेंगी. लेकिन सरकार के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो जन औषधि उतनी दवा मैन्युफैक्चर करके हमको दे सके और हम जनता की सेवा कर सके. हम लोगों को तो हमारा मार्जिन से मतलब है. जो 20% मार्जिन मेरे रिटेलर को मिल रहा है, दे आर हैप्पी. आज हम देखते हैं अगर व्यापार में अगर कोई मार्जिन तो 20% का मार्जिन उसके परिवार को चलाने के लिए बहुत नहीं होता है वर्तमान परिस्थितियों में. लेकिन फिर भी वी आर हैप्पी टू हैव द मार्जिन ऑफ 20%. मेरा रिटेलर देश के 8 लाख 8.5 लाख रिटेलर 20% के मार्जिन में खुश हैं. हमें कोई तकलीफ नहीं है. मतलब गवर्नमेंट शुड फिक्स द मार्जिन. हमने कभी भी ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एनपीपीए की लिस्ट बढ़ाने का या कंट्रोल कैटेगरी बढ़ाने का कभी हम लोगों ने विरोध नहीं किया. इट इज द गवर्नमेंट ड्यूटी टू डू इट. अगर वो चाहते हैं पूरे देश में प्राइस मार्कअप कर दें. हमारे को क्या मतलब है. अगर प्राइस मार्कअप होगा पूरे दवाओं पे मार्जिन फिक्स होगा. ट्रेड को जो मिलना चाहिए या उनके परिवार को जो पालना चाहिए. आज आपको नहीं मालूम है इस पानी की बोतल को बनाने में 1 रुपया लगा था या 4 आने लगे थे या 8 आने लगे थे या 1.5 रुपया लगा था. लेकिन इसकी कॉस्ट तो 10 रुपया है. आपको नहीं मालूम. मैं एक शर्ट पहना हूं, मेरे शर्ट की कॉस्ट अगर 5,000 रुपया है, 2,500 रुपया है, मुझको नहीं मालूम उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या थी.
लेकिन अगर दवा की मैन्युफैक्चरिंग हुई तो सर को मालूम है कि रॉ मटेरियल से लेके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आई, और इनके बाद के लोग जो मार्केटिंग वाले हैं उन लोगों को मालूम है मार्केटिंग कॉस्ट उसकी कितनी आई। तो अगर उस पर 120 रुपया एमआरपी है और 20 रुपया अगर 12% टैक्स लगा दे तो 108 रुपया, और उसके बाद में 20% मार्जिन अगर रिटेलर गड़ाए तो वो 72-78 रुपीज में जाके मार्केट में जा रही है, और वो 120 रुपए में टैक्स लगा के सरकार के वो मार्केट में बिक रही है। हमें हमारे मार्जिन से मतलब है, हमें और किसी से मतलब नहीं है। हम तो चाहते हैं कि लोगों को सस्ती दवा उपलब्ध कराएं, सस्ती दवा भी उपलब्ध होगी, हमारा मार्जिन फिक्स होगा, दैट्स इट। ट्रेड को इससे और ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, यही हमने सरकार को भी बोला है। सस्ता, सस्ता means you should appreciate it. 2015. Tell your name. Name. It's a good name. My name is Parul Vaishnav. Sir, in 2015, first 3D printed tablet was approved by US FDA. Yeah. And after then, research has been going on, and I'm also doing research in this Yeah. area. So I want to know what your thoughts about 3D printing technology in pharmaceutical industry. इनका स्टैंडर्ड्स इतना हाई है, टफ क्वेश्चन है, बट आई विल आंसर. सी, यूएस एफडीए ऑलवेज ट्राइज टू गिव द न्यू थिंग्स. इट वांट्स टू ब्रिंग कंटिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग, गुड जीएमपी, सी जीएमपी, lot of things. So 3D, it has approved, it is being practiced, but in India it has to take shape. So you are the people doing lot of work. आपको बढ़ाना है आगे. There may be lot of people who may not know what it is. 3D printing क्या है? मुझे पता है थोड़ा, little, but it will come. It will come very fast. Think, and I think you are in the right area of research. If you are doing a dissertation, छोटा कुछ, you are in the right area. It is a new thing. It is new as ये अपना क्या बोलते हैं, say continuous manufacturing, automated manufacturing. So it is encouraged. So be assured you are in a great area. 3D printing continue करो, tablets in that area, and you may be needed as a specialist in some companies like Glenmark, अपना possibility. But it will, everything is happening in India. That is what the whole idea of this conference is. Hope I answered. Maybe little, but just touch upon what you are looking for. Yes. It is a new area. Respected sir and all shareholders. Sir, my question is that scope or future of pharmacovigilance in India for pharma students. Say for example an injection, उसमें अगर foreign particle या something आ गया, something, you know, ये cell wall अगर रह गया, bacterial, some infection, something रह गया, it will immediately cause fever. There are certain drugs they will cause rashes in the body. So pharmacovigilance team, what it does, it monitors कि इधर adverse reaction हो रहा है या नहीं. So any company needs a pharmacovigilance team. Actually मैंने ये बोला नहीं था. It is good you touched upon it. There may be a lot of areas which we have not touched. जैसे 3D printing आ गया. Pharmacovigilance. Yes, it is a very important department. A company has a full department. It will monitor any adverse reaction, and if it finds defect in that sample or manufacturing, it will recall the products. Entire batch will be recalled. Say for example injection आपने ले लिया जिसमें कुछ foreign particles या something है, आपको बुखार आ जाएगा. You will have more fever and you will report it. It will go to the company. The company will withdraw the sample from the market to prevent many people from getting that reaction. So pharmacovigilance is extremely important. और मैं one more thing I'll add, every company is making it compulsory for each individual to report और training देती है. I know Glenmark gives us training, myself and Pritam ले लो, कि anything report करना है. Glenmark drug का adverse reaction होगा तो we have to report. That is we have been taught.
numbers readily available है उनको phone करो, immediately they will investigate. Yes, pharmacovigilance is a big area. The fraudulent activities at the trade level, like the sales fraud and good manufacturing practices fraud, clinical trials fraud, especially during the time of COVID, because as we have learned all during the graduation that clinical trials is a huge process. 4 phases takes a lot of time, and how come during the time of COVID they come out with different solutions? Then can you please highlight about the fraud and abuse? In manufacturing level, they are adopting GMP. So whatever good distribution practices are there, we are always teaching to our people, always emphasizing on the seminars in our trade. You will see that in whether it was COVID or prior to COVID or post to COVID, only 0.3% fraudulent have been caught through our chemist. 0.003. It is negligible. 1 or 2 maybe. In 8.4 lakh chemists, 1 or 2 people may be wrong. But it is not the community. Whatever we tell our people, right drug to the right patient. It is our aim. So we are not leaving any stone to ask the culprit to go or to surrender their license, to punish them. We are giving all thoughts about it. So trade is that. In COVID, you have seen that there were the people who were not engaged in manufacturing or trade. They were making this remdesivir also. In Indore also it has been caught. So they were not the trade people. They engage some hospital. You find that in trade, what happens in this pandemic. There were the people, I will not name the name, I will not take the name, but the people, those were engaged in the hospital that time. The patient if died, what they used to do if he has taken or she has taken 1 or 2 vial of remdesivir, another 5-6 vials have been given to the patient and it was not utilized, they used to sell out of the hospital. They were doing fraud practices. At our chemist shop, the drugs, regular drugs, I cannot say that paracetamol, azithromycin, cough syrup, and enoxaparin, these were available at chemist shop. But whatever the needed drugs, remdesivir or other tocilizumab like that were in the custody of the government. So our people were not involved in that. Just I'm talking about the pandemic. So whatever the percentage I have told, we are emphasizing on it, and we also instruct to our people right drug to the right patient. That is our motto. Regarding GMP and clinical trials, sir. As long as it is not manufactured, how it will come into the supply chain? As I told you, it was not manufactured by the right person also. It was manufactured by the fraudulent people. So they are the fraudulent people. They are manufacturing in their home, in their some remote area. They have not taken any GMP or GDP or WHO licenses for that. They are doing it. If somebody has taken, somebody was asking how we will do this in time to come. Sir has told that you have to go for a WHO in that way or this way. But they have not taken. It is their aim to give the fraud medicine or to manufacture the fraud things. That is why they are giving to the. But they are giving in that area. Those people are not engaged in our system. They are out of our system area. But from out of the system area, sometimes it comes to the system. So that we are taking up. We are taking the help of the FD of the country, FD of the state, of the district. That these type of people should be shunned out from the trade. Fraud is a part of society. Some people do it, not some people. थोड़े Most do it, sir. पता चलेगा तो फिर वो तो अरेस्ट हो जाएगा ना. Somebody reports, the person will get arrested. और pharmacovigilance वाला, some fraud drug होगा तो immediately reaction आएगा. Pharmacovigilance team will come into action.
will go to the police and report and all. But I can tell you in manufacturing in India, things are very tight. Local GMP, WHO GMP, US FDA, EU GMP, MHRA, PDMA, जो compliance है is very strict. यहाँ के students, one of them I think will go to QA, QC testing. They will not surrender. वो बोलेगा ये fail हो रहा है batch. So fraud, yes, but fraud can't. It happens. क्या कर सकते हैं? उनके लिए police है फिर arrest or jail, and you should be in a position to catch them. But I can tell you, generally it doesn't happen. It is some opportunities to do it, but in a general company, no one will do it. That I can assure you. Yes, it happens, and you should be vigilant to arrest them and take them to police and arrest them and put them in jail. That is the only answer. It's the answer. So thank you. Favipiravir was tested in Japan, Russia. Studies are available, toxicity data is available. So the company who goes to CDSCO, the regulatory body of India, goes with data. So normally they go with pakka data, accelerated but pakka. They will not take a chance with health of the people. And need is there. Remdesivir was needed, Favipiravir was needed. So it was an urgency. Na? And see the results. अपना vaccine, India के दोनों vaccine 175 cross कर लिए. Nothing is happening. It is fine. So that says our vaccines are the best. Indian vaccines. The two Indian vaccines. So as an Indian, I think you should take this data. 175 crore plus proves that it is efficient, ना madam? तो वही तो clinical trials तो नहीं थोड़ा accelerate किया था. But you should give them, they are saving lives also. So you should give them a margin कि वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं जान बचाने के लिए. That is the only answer I can give. But what you are saying, a little acceleration is not good. But नहीं करेंगे तो फिर जान कैसे बचेगा? तो इसलिए थोड़ा speed up करना पड़ता है. Even US FDA did it in case of remdesivir. अब बोलो. आंसर आपका जो क्वेश्चन था रिगार्डिंग कि जो प्रॉब्लम्स वगैरह होता है सो फ्रॉम रेगुलेटरी पास प्रोस्पेक्टस फ्रॉम EU GMP और US FDA so when they are going to give the approval for any manufacturing sites so they are requiring lots of data. In the case of COVID many drugs are allowed based on because there is a process when it will goes to different transition phase. So there will be a trial batches, scale-up batches, then exhibit batches, and the samples will be stored in a different climatic zones as per the ICH guideline. So as per that, the stability data company having so based on that emergency approval they have received during the COVID. Your second question regarding the fraudulence. So in pharma company, the techniques are more controllable. In the form of, we'll say, the piracy or copy of the drugs. So there is a transition phase which is known as the track and trace. So each and every drug is having a serial number, unique serial number. So anybody can identify from the anywhere, from its starting stage. Means from raw material entered to the manufacturing side to distribution of the customer. So from that track and trace number, serialization number, which is having a unique ID and anybody can find. So the duplicacy of drug can be prohibited by following this track and trace, which is generally known as a GTIN number. So there is a barcode or 2D code, QR code. If you will scan it, you will got all the information. If there is a fraudulence, you will get the information. In the case of domestic drug, it may be happen because the cost it will require that cannot be afforded by the small industries. So there is a regulation and there is a control. Pharmacy is the field where industry is working on a risk-based management.
each and everything will be assessed, and then they will take a particular CAPA, corrective action and preventive action. Based on that, as sir says regarding this CIP, continuous improvement. So FDA always required that CIP. Thank you. लेवल लीडर्स और मैं तो वो 3D वाली से बोर्ड हो गया, मेरे पास आधा आंसर था। मिश्रा जी सर अगली बार पढ़ के आता हूँ थोड़ा। So होता है, it happens. So this conference you should enjoy. Come up with answers, questions like you. I think you are still not satisfied. I am satisfied with this answer, but मेरा नहीं। Myself, Tripti Solanki from Confidar ISEC College, and my question is: people say that the growth in pharmacovigilance is stopped after some time. You can't grow after. You can't grow from the same point. Growth is more important. Growth is more in the industry, but in the pharmacovigilance is not. No, what you heard is all wrong. Pharmacovigilance is itself a big discipline where you have to monitor your say 200 drugs if your company every single batch क्या हो रहा है, इसका adverse reaction कहीं है कि नहीं. So whatever you have heard is all wrong. Pharmacovigilance has a big future, big scope, huge scope. It's a big discipline. It's a big discipline. Even clinical research is a big discipline. Discovery research is a big discipline coming in. Next 5 years, if this conference is held, I can tell you we'll have a lot of students asking questions on discovery, or they may be in the discovery area. Actually, I am in discovery also, but I will tell you what all fields are the most important. Pharmacovigilance, नया area continuous manufacturing 3D, IPR, QA/QC, regulatory, then pharmacology, pharmaceutical chemistry, pharmaceutical analysis, biological analysis, biological discovery, API discovery, that is new molecule discovery, NC discovery. These are all the fields. If I miss something, you can tell me. These are all the fields are all important. So don't go by what you have heard. Panelist. और अंत में मैं आपको मेरी ओर से केवल इतना कहना चाहूंगा क्योंकि आज 2089 नववर्ष की शुरुआत भी है और एक बड़ा नया कॉन्सेप्ट कई सालों से चल रहा है, IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो बेसिकली आप लोगों का प्रयास ये होना चाहिए कुछ न कुछ एक नया विचार आप में यहाँ से जाए और हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की कविता के साथ आप यहाँ से जाएं। इस सेशन को हम समाप्त करेंगे कि हार नहीं मानूंगा मैं, हार नहीं ठानूंगा। इसी तरीके से आप लोगों के मन में भी एक नया विचार उत्पन्न हो और इसी पंक्तियों को बहुत ज्यादा अगर आपको पूरी कविता भी याद नहीं रहे, ये केवल इतना याद रखना है, हार नहीं मानूंगा, हार नहीं ठानूंगा, तो भी आपका काम हो जाएगा। And Rajesh Sharma sir for handling this session. And this session was really very interactive and it brings a lot of energy in all of us. So I would request now Rajesh Sharma sir to present a moment to both our panelists.